हैं और हमारी जो ब्रेन है वो हमारी मेमोरीज को कंसोलिडेट करती है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती है. वी बेसिकली गेट not just ready for the next day, but also a lot of internal processes happening within our bodies when we sleep. So obviously अगर हमें अच्छी नींद नहीं आएगी तो बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं. फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, इम्यूनिटी वीक हो जाती है, मेंटल इश्यूज भी होते हैं, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन हो सकता है, एंड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स कैन हैपन. Undoubtedly, sleep becomes a very, very important thing for all of us. My name is Chavi, and I think the introduction that I want to give today for myself is that I'm really a poor sleeper. मुझे बहुत अच्छी नींद नहीं आती है रात को, and that's why I'm looking forward to today's session. So in today's session, the input that I'll be giving will be of the problems that are related to sleep, and our esteemed guest is going to be answering all our queries. So hang in there. आपके भी दिमाग में अगर कोई सवाल आते हैं तो उन्हें please note करके रखिए, because at the end of the session I'll also be taking audience questions. So today we have Dr. Anand Jaiswal, who is the Senior Director of Department of Respiratory and Sleep Medicine Division in Medanta. He completed his MD from Vallabhbhai Patel Chest Institute, Delhi in 1987 in TB and respiratory diseases and was awarded a gold medal. He has more than 10 years of experience as a senior resident in various hospitals and was awarded a fellowship in TB research. Doctor, I think your voice is echoing, so you can put the mic off in one of the devices. You can put yourself on mute on one of the devices, please. I think so. I'll do that. Is it okay now? Yeah, it's better. Yes, the echo has stopped. So I was just introducing you to everybody. Dr. Anand Jaiswal has been a part of many research works with Indian and overseas trail sponsors like ODA UK, AMGE and India, Pfizer India, CSIR, OSDD, etc. And he has served as a chairperson, moderator, and lecturer in many globally renowned conferences. Doctor, a very, very warm welcome to you. Good evening. I'm going to be bombarding you with a lot of questions. Let's see how many of them I can answer. I'm sure you'll be able to answer all of them. बहुत ही common problems बहुत से लोगों को होती हैं sleep related, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि why is sleep so important? So, Chavi, as you said, body needs time to rejuvenate, and that happens to be the prime function during the sleep. So, it kind of system which the nature has put, so that every system reboots itself. So it's a rejuvenation which happens, and during this phase body repairs the damage during the day. So there is a set of hormones in our body which will start up with the repair work. As you see the road building in the nights and at the night shifts of the workers, so our body starts that work in the night, and the body hormonal status changes and the cell repair, and the kind of cytokines and the hormones which we need for the entire day, they are restored up, and our brain, as you said, consolidates the memory, and there are a lot of toxic materials which accumulates into our body, be it cells, be it our muscles and brain. So they are removed during the night period, and body does forms new fresh neural connections, and newer messengers are saved so that we can work in the day. So for our health, on a short term basis as well as on long term basis, it is essential that we sleep. So if you don't sleep, and a chronic insomniac patients, their mental faculty, their system starts getting compromised. Their ability to take judgments, cognitive functions, and higher functions progressively deteriorates. So that is what body does in the night, so that we can work with good quality of our brain, and each system can cope up with the day's stress. Okay, that sounds. I mean, I have like 100 questions which came into my mind while you were talking about it. सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि कितनी नींद enough होती है, because मेरे जो husband हैं वो तो 9-10 घंटे सोकर भी बोलते हैं मैं अभी 2-4 घंटे और सो सकता हूँ, मेरी नींद पूरी नहीं हुई, और मैं जितना भी सो लूं मुझे लगता है मैं ज्यादा ही सो गई हूँ. So what is that ideal number of hours that a person needs for all this to happen? So that depends upon now the age
So if you take adults till say 50 years of age, you need a 7 to 8 hours of sleep. That is what is seen. And with each hour of compromising with your sleep, the effect on mortality starts becoming more and more. So there is a very good study which has seen that with each hour of compromise in this 6 to 7 hours starts increasing the mortality in the groups. So I would say for an adult, this is a period with which we should strictly adhere. The children, as you see, they when they are newborn, they sleep for 15 hours, and that's okay. Gradually, their circadian rhythm becomes okay, so they start decreasing. The same thing happens in elderly. The 5 to 6 hours of sleeps is quite refreshing for them. As their day activities also gets a little less, for elderlies 5 to 6 hours is good enough. For most of the adults it is 7 hours and 8 hours. तो अगर कोई ओवर स्लीप कर रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसको? So there are various kind of things. It's those who sleep more, उसमें ये देखा गया है कि ये हमेशा पैथोलॉजिक नहीं होता है. Some by habit are long sleepers without any disease as such. And there is nothing wrong in their physiology or metabolism or their survival. So they are habitual long sleepers. So some of these habitual sleepers do not have any reasons, so we say that they are just idiopathic long sleepers and we leave them. But if sleeping starts affecting your daily activities, you fall asleep while working, while reading, while talking to someone, now that is something which becomes abnormal. So if your husband sleeps well and he remains good in the daytime, let him be a lazy long sleeper, what we call as. I think it is definitely hereditary. My father-in-law also sleeps a lot. Yes, ओके yes. डॉक्टर, सो ये बताइए कि ऐसा मैंने बहुत सुना है कि स्लीप हैबिट्स भी होती हैं कुछ, और हेल्दी स्लीप हैबिट्स आर इम्पोर्टेंट. तो क्या होती हैं स्लीप हैबिट्स? सो देखिए, ये भी एक ना अच्छा खासा लॉन्ग चैप्टर है हमारी बुक्स में. जब हम लोग स्लीप और स्लीप हाइजीन करके एक चैप्टर आता है, हम लोगों को पढ़ाया जाता है. सो उसमें ये पहला वर्ड लिखा है कि जिस तरह आप अपने काम के लिए सुबह 1 घंटा, यू विल गो टू वॉशरूम, टूथब्रश, शेव, है ना, एंड यू विल बी पेइंग, एंड दैट 1 hour you need for your getting up and starting going to work. So similarly, there should be a time interval where you are going to sleep for 1/3 of your life is going you are going to spend that way. So for that also you should do some preparations. So in that, usually people who are good sleepers, they are never bothered because they have no difficulty in getting to sleep anytime. But those who start having this problem of insomnia or delayed sleep, or sleep which gets preponed due to their shift work or the work in the offices, in them there is an issue. So there the role of sleep hygiene practices comes. So if you are not able to sleep, or if you get up in the night and then you're not able to fall back to sleep, so getting in night is okay also, but you should be able to fall back sleep in another 10 to 20 minutes. So there are two kinds of sleep things, where you're not able to go to sleep and then you get up and then you don't sleep. So this करेक्ट. kind of things need some good hygiene, sleep hygiene lectures or kind of tips. So for them, usually we say the best is start unwinding yourself, and at least 1 hour of unwinding is बहुत जरूरी है. मतलब आपका जो डेज में स्ट्रेस रहा, जो इमोशंस रहे, जो थॉट रहा, उसको आपको अबंडन करना है. आपको अपने आप को ये बोलना है कि ये आज के लिए हो गया, अब मैं आज इसके लिए और कुछ नहीं कर सकता हूँ. आई विल टेक दिस इशू टुमारो मॉर्निंग. So I abandon all these thoughts and emotions, so leave me. So this unwinding to your own self is essential, and telling that night is not going to solve these problems which occurred to me in the day. So unwinding is very important, and it should happen at least say 1 to 2 hours before you are retiring for the day.
After having said this, you have to see whether what gadgets you use, whether it is a laptop or a mobile or a TV, or you are on a social media. So every kind of instruments, they say you should stop at least 30 minutes before you are planning to go to your bed. So these are the two essential things which you have to adopt, and rest of the things are secondary, in the way that you should have a comfortable room, you should draw your curtain say 1 hour before, the temperature should be comfortable to you, the noise should be seen they are cancelled, either you use your earplugs or you use other means where the noise should not disturb your sleep. Your bed, your clothing should be comfortable to you, and then you should not be too stressed to not sleep. मतलब घड़ी नहीं देखते रहना कि मुझे नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है. You can take I a do that. novel. So that is what they say, don't look at the watch. अगर नींद नहीं आती है तो आपको बेड पे लेटना नहीं है, आपको उठ के थोड़ा देर के लिए बाहर टहलना चाहिए, एंड वंस यू आर फीलिंग स्लीपी देन गेट बैक टू बेड. बेड के ऊपर लेटे हुए नींद का इंतजार करना ये ठीक नहीं है. लोग बोलते हैं यू बिकम मोर एजिटेटेड एंड रेस्टलेस. सो ये कुछ चीजें हैं. और यू कैन प्ले सॉफ्ट म्यूजिक, कमरे की लाइट को डिम रखें. एक ये मैंने स्टडी पढ़ी थी जिसमें लोगों ने नाइट में ब्लू लाइट लगा के देखा, तो देखा कि उनकी नींद डिस्टर्ब होती है. एंड बाद में ये साइंटिफिकली प्रूव किया गया कि ब्लू लाइट से हमारी नींद का प्रॉब्लम होती हैं और उसको नहीं लगाना चाहिए. सो ये है. और यू कैन रीड अ स्मॉल नॉवल विच शुड नॉट बी फिक्शन. It should be a simple novel which can calm you down and help you sleep. So Or you these are can read the a bed. maths textbook. You can read a Yes, maths yes, textbook. yes. So whatever is difficult to you, you can go on reading, but don't need those spy novels or something action or something horror. So that will create a problem. So these are the एक things, एक और मेरे पास बहुत अच्छी टिप है डॉक्टर. Don't have kids, because once you have kids you cannot sleep forever. But सो jokes apart. खाने पीने में भी थोड़ा सा ध्यान रखना है. नाइट की मील्स हैवी नहीं होना चाहिए, और उसको 7-8 बजे आपको ले लेना चाहिए. आपको सिगरेट, कॉफी और निकोटीन कंटेनिंग चीजें, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये थोड़ा सा इवनिंग में, नाइट में आपको अवॉइड करना चाहिए. सो ये चीजें हैं जो आप प्रैक्टिस करके, आई थिंक बिसाइड्स ऑल दीज थिंग्स, unwinding yourself, leaving the day's thought that nothing can now be done with these issues. This is the end of the day's chaos, and now I have to retire. So I think it's a lot to do with how you condition your mind with that thought, because Yes. ये ऐसे थॉट्स है जो दिमाग से निकालना बहुत मुश्किल होता है. So you just have to basically keep conditioning yourself that this is something you want to leave on the next day and not now. It doesn't have to be addressed immediately. अच्छा डॉक्टर, स्लीप डेफिसिट कुछ होता है? इज इट पॉसिबल कि मुझे स्लीप डेफिसिट है, मतलब मैं सो ही नहीं पा रही हूँ, और उसके क्या फिर नुकसान क्या होते हैं उसके? So sleep deficit, ये होता रहता है because of work pressures and something, and it goes on adding up to your log, of the sleep log. So brain के लिए एक rhythm set है कि सूरज उगेगा तो बॉडी के एक्टिविटी को बढ़ना चाहिए, बॉडी हार्मोन्स, बॉडी की अलर्टनेस उस हिसाब से टाइम है. जैसे ही सूरज ढलेगा तो आपको बॉडी का मेटाबॉलिज्म उस हिसाब से आपका कम होगा, और यही हम लोग सिरेकेडियन रिदम बोलते हैं. जो लोग इसके साथ अपने को टाइम कर सकते हैं, उनका बॉडी अंदर से और अलर्टनेस अंदर से अच्छा चलता है. अब अगर ये चीज पूरी नहीं होती है तो धीरे धीरे इसका असर बॉडी के ऊपर आना शुरू होता है, इन द सेंस दैट सबसे पहले आपके हायर फंक्शंस अफेक्ट होने लगेंगे. आप इरिटेबल हो जाओगे, आपको चीजें याद करने में दिक्कत होगी, या आपको लगेगा कि ये काम बेवजह मेरे ऊपर क्यों दिया जा रहा है, मैं इतना एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकता हूँ. आपको डिसीजंस लेने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और क्रूशियल डिसीजंस लेने में आप हिचकोगे कि ये अभी मैं नहीं करता हूँ, कोई और कर दे मेरे लिए. सो ये सब चीजें शुरू होती हैं, और धीरे धीरे ना इतनी एंजाइटी और एजिटेशन शुरू हो जाता है कि उससे हमारे सिस्टम पे असर आने लगता है. इन द सेंस हमारा हार्ट बीट बढ़ेगी, धीरे धीरे हमारा ब्लड प्रेशर काबू से बाहर होता है, धीरे धीरे हमारे बॉडी के हार्मोन्स इस तरह करते हैं कि हमारे को ओबेसिटी और ये रिस्क ऑफ डायबिटीज,
ये सब बढ़ने लगते हैं. So beside your quality of the work, internally because of agitation and anxiety, suppose आपको कोई काम दिया आपके बॉस ने और वो आपने अच्छे से नहीं किया, now this is a stress for you because there was a sleep deficit. तो आपके शरीर पे उसका साइड इफेक्ट्स आएगा, आपको compete करना है अपने फेलो बीइंग से, वो आपके ऊपर प्रेशर रहेगा. सो इट्स अ मतलब साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ दैट फिजिकल स्लीप डेफिसिट. तो डॉक्टर आप बोल रहे हो कि सनराइज और सनसेट के साथ आपका जो स्लीप साइकिल है वो मैच करेगा तो इट्स द बेस्ट. सो व्हाट अबाउट पीपल हु हैव ऑड वर्किंग आवर्स? उन्हें तो बहुत प्रॉब्लम होती होगी. हाँ, ये शुरू हो जाता है धीरे-धीरे और मेरे को लगता है ज़्यादातर जो यंग लोगों में आजकल ये प्रॉब्लम्स आती हैं ऑफ साइकोलॉजिकल नेचर या साइकियाट्रिक नेचर, ये इसी वजह से होती हैं. अपने को धीरे-धीरे जब भी पॉसिबल हो अपने को एक रिदम में तो ढलना चाहिए. बट जो लोग शिफ्ट ड्यूटीज़ करते हैं, जैसे डॉक्टर्स भी पहले हम लोग जैसे नाइट ड्यूटी करते थे, फिर मॉर्निंग आवर्स लगते थे, हम 24 आवर्स करते थे. So we used to be awake the whole night in emergency. So this does happen. But you should try to get back to some routine after a period. अगर कोशिश करें. अगर आपका मतलब ऐसा ही सॉरी सॉरी टू कट यू, बट ये जो रूटीन आप कह रहे हैं, अगर ऐसा भी है किसी की लाइफ में रूटीन कि वो दिन में सोते हैं और रात में जगते हैं, डज दैट आल्सो वर्क फाइन? हाँ, तो ये इससे अगर आप अपनी स्लीप को पूरा रखते हैं, सपोज 7 to 8 आवर्स पूरा रखते हैं, तो फिजियोलॉजिकली बॉडी गेट्स चार्ज्ड. दो देयर कैन बी सम इश्यूज विद द कॉग्निटिव फंक्शंस, बट योर फिजियोलॉजी विल रिजुविनेट इन दैट पीरियड. सो दैट इज ओके. बट अगर आपका डेफिसिट रहता है और अगर आपकी चेंज होते रहते हैं ये आवर्स कि एक दिन सुबह एक दिन रात, किसी दिन जल्दी किसी दिन लेट, तो हम लोग उसके लिए फिर कुछ कुछ करते हैं. हम लोग उनको बोलते हैं नैप्स लीजिए 20-20 मिनट्स के. सपोज somebody feels very sleepy in the daytime, he could not sleep in the night, so we say 20 minutes nap लीजिए आप. उससे एकदम से रिजुविनेशन आता है. सो इवनिंग में अगर आपने खाना खाया और 20 मिनट का एक शॉर्ट नैप लिया एंड यू वेक अप, then you get your body get time to rejuvenate. एंड मेमोरी कॉग्निटिव फंक्शंस और आपकी बॉडी की जो एक्टिविटी है मोटर वो ठीक होती है. सो शॉर्ट नैप्स फॉर दोज who feel sleepy because of night work or something, they are very helpful in them. तो इज इट करेक्ट टू से कि अगर समझो मुझे 8 आवर्स की स्लीप रोज चाहिए, तो मैं ये नैप्स में भी अगर 8 आवर्स पूरे 24 आवर्स में 2-2 घंटे या 3-3 घंटे करके 8 आवर्स पूरे कर लेंगे हम लोग, तो देन दैट्स ओके फॉर द बॉडी? नहीं नहीं, नैप्स आर एक जैसे हम बोलते हैं जुगाड़ है वो आपको थोड़ा टाइम के लिए. इट इज नॉट गोइंग टू, यू आर नॉट गोइंग टू रीच द डीप स्लीप. जब भी आप सोते हैं तो लगभग 90 मिनट बाद आप पहुंचते हैं अपनी डीप स्लीप में. ओके. जो वो डीप स्लीप है उसमें आपकी मेमोरी कंसोलिडेशन, ड्रीम्स और सारा हार्मोनल रिप्लेनिशमेंट होता है. तो ये 20 मिनट में आप सुपरफिशियल स्लीप सोते हैं, तो आपकी बॉडी उस रेम स्लीप जो होती है उसमें नहीं पहुंच पाएंगे. सो वो आपके लिए बहुत लॉस रहेगा, उसमें कॉग्निटिव फंक्शंस आपके नहीं आएंगे. And is it possible for somebody to get used to a certain sleep cycle? Ki, this is how I have conditioned my body, so now my body is used to it. सो कि मेरे मैं को 6 देखिए घंटे इस समझिए 6 घंटे रात को मैं सो जाता हूँ, फिर 1-1 घंटे की नींद मैं दिन में नैप्स में निकाल लेता हूँ. Does that work? हाँ देखिए, हाँ मेरे ख्याल से देखिए इस पे कोई ऐसा पब्लिश स्टडी तो होता नहीं, लेकिन मेरे को ये लगता है जैसे हमारे पीएम भी कहते हैं मैं 4 घंटे सोता हूँ एंड ही लुक्स हेल्दी, है ना. ही इज एबल टू टेक डिसीजंस, ही इज एबल टू वर्क. एंड उनकी किसी सिस्टम में अगर गड़बड़ नहीं होती है तो एक पैटर्न अपनी बॉडी के लिए अगर हम सूट कर लेते हैं और उससे अगर कोई नुकसान नहीं देखते हैं हम अपने जीवन में, if they are able to concentrate decision making, their blood pressure, sugar, everything looks normal, it is okay. I think we should not go by strictly by books कि अब ये बस 8 घंटे का मेरे को ब्रेक लेना ही है. Okay. And doctor, what is sleep apnea and how does it affect us? सो स्लीप एपनिया एक डिसऑर्डर है जो अब काफी कॉमनली देखा जाता है. सो हम लोग भी जब बचपन में थे तो वी यूज टू सी अवर एल्डरी पीपल स्नोरिंग.
सो बहुत खर्राटे लेते थे, कई बार हम लोग सो नहीं पाते थे, कई बार ट्रेनों में जाते हैं हम लोग, तो ट्रेनों में भी ऐसी आवाज़ें आती थी। सो उस टाइम पे तो इतना नहीं पता था, बट धीरे-धीरे अब जैसे-जैसे डाटा इकट्ठा हुआ है, ये देखा गया है कि जो आदमी स्नोर करते हैं, वो सिर्फ़ स्नोर ही नहीं करते हैं, उनका रात में जो साँस की नली है, टोटली क्लोज़ हो जाती है। सो हमारा जो साँस लेने का पैसेज है, वो एक ल्यूमेन है, एक तरह से पाइप है। तो वो जब पाइप थोड़ा-सा पतला होता है तो उसमें से सीटी जैसी आवाज़ आने लगती है। जैसे किसी भी पाइप को आप ब्लो करेंगे तो उसमें से आवाज़ आती है। जैसे-जैसे वो नैरो हो जाता है, वो स्नोरिंग बढ़ती जाती है और एक स्टेज ऐसी आती है जब वो बिल्कुल बंद हो जाता है और उस स्टेज में जो स्नोरिंग कर रहा होता है आदमी, वो ग्रंट करता है, ऐसे आवाज़ें निकालेगा अजीब-अजीब और एकदम से एजिटेट होके उसका साँस रुक जाता है। सो इस तरह के पेशेंट जिनमें स्नोरिंग और साँस की ये तकलीफ होती है, उनका ब्रेन सो नहीं पाता है पूरी तरह रात में, वो जगा रहता है कि ये क्या हो रहा है बॉडी में और क्यों ऑक्सीजन नहीं आ रही है, तो वो अराउज़ करता रहता है बॉडी में। जैसे ही उसका साँस नैरो होता है, साँस रुकता है, तो ऑक्सीजन कम होती है बॉडी में और ब्रेन उसको उठा देता है कि उठो ये क्या कर रहे हो? मेरे को ऑक्सीजन नहीं आ रही है। सो ये रात भर चलता रहता है और वो सो नहीं पाता है। तो डीप स्लीप ब्रेन की नहीं आती है, दूसरों को लगता है ये सो रहा है बट उसका ब्रेन उसको उठाता रहता है। तो ये रात भर जगता है ये व्यक्ति और जो दिन में उसको फिर कंपेंसेट करने के लिए वो जल्दी सो जाएगा, बार-बार बातें करते-करते सो जाता है, उसको याद नहीं रहता है, उसको डे में उससे काम नहीं होता है, उसको मॉर्निंग हेडेक रहते हैं। सो ये डे में उसका सारा हाल बुरा हो जाता है। ऐसे ही लोग कई बार कार चलाते-चलाते रेड लाइट पे सो जाते हैं या ड्राइव करते-करते एक्सीडेंट्स कर देते हैं। सो ये ओके। इस तरह से एक व्यक्ति को अफ़ेक्ट करता है और धीरे से लॉन्ग टर्म जैसे ऑक्सीजन रात में कम होती है, तो बॉडी इतनी स्टिमुलेट हो जाती है कि वो अपना ब्लड प्रेशर और शुगर और हार्ट रेट बढ़ा देती है उसमें और ये बार-बार होता रहता है, तो धीरे से इन लोगों को ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारियाँ और शुगर और ये सब होने लगता है। वाओ! और डॉक्टर यॉर्निंग जो होती है, हम बोलते हैं वो बासी ले रहे हैं, मतलब बहुत नींद आ रही है हमको। डज़ यॉर्निंग रियली सिग्निफाई लैक ऑफ स्लीप? देखिए यॉर्निंग एक तरह का रिफ्लेक्स है, जो इंटरमिटेंटली अपनी बॉडी ट्रिगर करती है टू टेक अ साई ब्रेथ। ये ऐसा बोला जाता है कि लंग के कुछ एरियाज शैलो ब्रीदिंग से जब कंप्रेस होने लगते हैं तो वहाँ के कुछ रिसेप्टर्स अपने को स्टिमुलेट करते हैं कि टेक अ डीप ब्रेथ सो दैट द लंग रिमेन्स अ डीप ब्रेथ। बट ऐसा भी है कि जब स्लीप आने लगती है तो ये यॉर्निंग ज़्यादा होती है। सो स्लो और शैलो ब्रीदिंग से जब हमारी बॉडी के लंग में रिफ्लेक्सेस आते हैं तो एक डीप साई ब्रेथ आती है और ऐसा हो सकता है स्लीप के आसपास ज़्यादा हो। Okay, okay. That's why of course you yawn more when you're sleepy. ओके, यस। आई गेट इट। एंड डॉक्टर, ये आजकल तो मैं जिससे भी मिलती हूँ वो बोलते हैं नींद नहीं आई रात को, बड़ी प्रॉब्लम हुई, बड़े दिन से नहीं सोया, दिन में नींद आती रहती है। सो ये प्रॉब्लम्स जो है बहुत कॉमन होती जा रही हैं। बट व्हेन इज द राइट टाइम टू गो एंड सी अ स्पेशलिस्ट एंड व्हाट आर द सिम्टम्स टू लुक आउट फॉर कि ये चीजें मुझे हो रही हैं, अब मुझे एक स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए? सो छवि देखिए कोई भी आदमी अगर जैसा मैंने कहा सोने जाएगा तो नॉर्मली 10 से 20 मिनट में उसको नींद आ जानी चाहिए। ठीक है? सो अगर ऐसा नहीं होता है सपोज़ आधे घंटे तक आप बेड में लेटे और आपको नींद नहीं आई तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम। बट वो 1 दिन का नहीं है, अगर आप किसी कारण से 1-2 दिन, 3 दिन, हफ्ता भर ऐसा नहीं कर पाए हैं, तो हम लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। अगर ऐसा लगातार आपको से ओवर 3 मंथ्स तक ऐसा चलता है और कोई रिवर्सिबल फैक्टर्स नहीं हैं आपके उसमें, जैसे आप अल्कोहल नहीं पी रहे हैं, आप कैफ़ीन नहीं ले रहे हैं, आप सिगरेट स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं, ये सब के बावजूद आपको अगर ऐसा होता है तो हम मान सकते हैं कि 3 महीने बाद कि ये एक समस्या है और इसको आपको मिलना चाहिए स्लीप स्पेशलिस्ट से। ऐसा ही जैसा मैंने बोला कि बीच में अगर नींद खुल गई आपकी रात में, या सो और आप दोबारा 10 से 20 मिनट में सो गए तो इट इज़ नॉर्मल, इट हैपेंस। एंड अगर रात में भी आपको आधे घंटे से ज़्यादा बिस्तर में नींद नहीं आती है और वो भी ऐसा 3 माह तक होता रहता है, देन इट इज़ समथिंग व्हिच यू शुड कंसल्ट। ओह,
ओके, आई थिंक आई नीड टू फिक्स एन अपॉइंटमेंट विद यू, बिकॉज मेरे साथ ऐसे होता है डॉक्टर, मैं रात को, जब मैं सोने के लिए जाती हूँ, देन आई गो टू स्लीप इन 5 seconds, बट इन द मिडल ऑफ द नाइट आई वेक अप एंड देन आई एम अवेक फॉर एन आवर 2 hours, और मैं वो टाइम देखती रहती हूँ कि कितने घंटे बचे हैं सोने के लिए, 6 बजे उठना है। So yeah, it's been a long time now. I think it's been like 6 months this has been happening. Yes. तो अभी मुझे रिसेंटली कोई बोल रहा था कि खाने से भी रिलेटेड होता है कि आपने डिनर कितने बजे किया था. इज दैट ट्रू? लाइक व्हाट इज द आइडियल गैप बिटवीन डिनर एंड बेड टाइम, और कितना खाना चाहिए? हाउ फुल शुड योर स्टमक बी ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10? सो ऐसा मतलब जो भी स्टडीज की उन्होंने बोला है कि हैवी मील्स अगर आप लिए हैं सो एटलीस्ट आपको 2 to 3 hours देना चाहिए, बिकॉज गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम इज समथिंग लाइक दिस। तो वो स्टमक से नीचे जाए तो 2 to 3 hours के बाद यू शुड फाइंड कि मैं अब लेटती हूँ सोने के लिए। लाइट मील्स या लिक्विड लिया है तो यू कैन ट्राई अर्ली स्लीप, बट हैवी मील्स के साथ देयर इज अ प्रॉब्लम। और इसमें जैसा जितना आप फैटी चीज ज्यादा लेंगे उस उतना ही आपका गैस स्टमक से खाना आगे नहीं जाएगा जल्दी। तो जितना फैटी मील आप ज्यादा लेंगे उतना ही आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम, सो हैव अ लाइट मील्स and then you can go off to sleep for 2 hours later. And if you have a heavy meal, then maybe 3 hours. That should be ideal period for saying that you can go to sleep. But avoid taking carbonated drinks in the late in the evening, especially coffees and anything which contains nicotine. So their half life is such that they take 6 hours to get cleared from our body. So evening में भी आपको कॉफी नहीं लेना चाहिए। Oh, okay. And what is sleep deprivation? So sleep deprivation, as I said कि अगर आपको 7 घंटे का स्लीप या 8 घंटे का स्लीप एडल्ट में नहीं मिलता है तो वो आपको डेप्रिवेशन स्टेट में हम मानेंगे। एंड एज आई सेड कि ये चीज इकट्ठी होती जाती है, बॉडी अपना हिसाब रखेगी आपसे कि आप इतना नहीं सो रहे हो, इट इज एडेड डेली। एंड एज आई सेड कि जितना स्लीप डेप्रिवेशन होगा ग्रेजुअली इट स्टार्ट्स विद योर हायर फंक्शंस, योर ब्रेन एंड कॉग्निटिव फंक्शंस, सबसे पहले वो अफेक्ट होने शुरू होंगे। और जितना स्लीप डेप्रिवेशन होगा उतना डे टाइम एरर्स एंड डे टाइम स्लीपिंग आपकी बढ़ती चली जाएगी। And there is a possibility that you will end up with some accident driving your vehicle, or you would not be able to kind of focus on a meeting, or you will go off to sleep while talking to someone. So these functions starts getting affected once you start accumulating that sleep deficit. एंड और क्या फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं डॉक्टर स्लीप डेप्रिवेशन की वजह से? लाइक So एनी sleep अदर मेजर deprivation का प्रॉब्लम? जैसे मैंने आपको अभी बताया, देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी। उन्होंने ये प्लॉट किया है कि जैसे जैसे आप स्लीप का आवर्स को कम करते जाएंगे और दूसरी तरफ उन्होंने मॉर्टेलिटी आपकी प्रिडिक्ट किया, तो मॉर्टेलिटी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग विद ईच आवर। सो आपके मॉर्टेलिटी इफेक्ट रहता है। ये ध्यान रखिएगा कि अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स टू अस इज सर्वाइवल। सो अगर स्लीप को आप कम करते जाएंगे, व्हाट इज रिकमेंडेड, योर मॉर्टेलिटी विल इंक्रीज। देन योर ब्रेन फंक्शंस, देन योर हार्ट फंक्शंस, your blood pressure, heart irregularities, and gradually, your lethargy, obesity, and other systems starts getting affected. So those patients, like those who have sleep apnea, they have a certain comorbidities which can occur, like they are more likely to have brain strokes, blood pressures, heart irregularity, what we call as arrhythmias, heart failures, diabetes, and something like this. So in those patients who have sleep apnea, these also start suffering. And what are the ill effects of oversleeping? So Not asking for yes. my husband. So as I said, this is not बहुत अच्छे से इसको स्टडी नहीं किया गया है, बट अगर ये डिसऑर्डर है तो इससे आपका अगेन जो स्लीप की क्वालिटी है वो अफेक्ट होती है। आपका जो एक्सेसिव स्लीप है उसमें भी आपके जो बॉडी फंक्शंस हैं वो स्टार्ट अफेक्टेड होने होते हैं। बट यूजुअली दे से दैट अगर आप 8 आवर्स 10 आवर्स तक ऐसे करते हो और डे टाइम में कोई ज्यादा आपको
प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं तो ऐसा कोई बहुत असर नहीं पड़ता है. बट आई थिंक लॉन्ग स्लीपर्स आर मोर प्रोन टू से obesity, diabetes and hypertension because of their inactivity, you know. So if you are Right. lying down and just eating and sleeping, then you know all the side effects of morbid obesity will take over. So if even if your cognitive functions remain okay, then you will start having obesity, then you will start having diabetes, and they would independently lead to heart diseases like coronary artery disease and hypertension. And then if you have obesity, you can come back and have that sleep apnea disorders. So long sleeping because of inactivity ultimately will bring you back to sleep disorders. And also oversleeping, I want to tell the viewers, it will kill your social life. It will affect your work because you'll I know, waste time sleeping and your I know. relationship will get affected. Yes, yes. Your relationships, your friendships, all will suffer. And So, doctor, you हम know, लोग Chavi, I yeah, used to remember in our days, na, we used to sleep in charpais, that okay, woven kind of thing. right. और हमारी मॉर्निंग होते ही ना हमारे पेरेंट्स उसको खड़ा कर देते थे, बेड को वाइंड करके वो खड़ा हो जाता. सो देयर इज नो बेड इन द डे टाइम, यू नो. आफ्टर 9 AM वो चारपाईज हमारी खड़ी हो जाती थी और वो बिछती नहीं थी डे टाइम पे. बस वो रात में फिर 8-9 बजे वो बिछती थी, उस पे गद्दा बिछाया जाता था एंड वी यूज्ड टू स्लीप. बिकॉज तो, घर में इतनी जगह नहीं होती थी कि चारपाई बिछी रहेगी तो चलेंगे कैसे. और वो बेस्ट है बिकॉज फिर जब चारपाई बिछेगी तो उसे देखते ही नींद हाँ, आएगी. आदमी लेट जाता है फिर. तो जैसे ट्रेन की बीच की बर्थ होती है ना, कोई सुबह आते ही बोलता है इसको नीचे करो, उठ जाओ जी. It is something like that. Yes. So you can और try this डॉक्टर on your husband and हाँ. see that he gets up and you wind up his bed up and it goes into the wall. Okay, I'll try that. That's a good cure for it. और डॉक्टर जो डार्क सर्कल्स लोगों को होते हैं वो भी क्या इट्स एक्चुअली रिलेटेड टू स्लीप कि नहीं वो बस ब्यूटी की अब प्रॉब्लम है वो. ये मतलब काफी चीजों से हो जाता है, स्ट्रेस से भी होता है, जो ज्यादा सनलाइट में और चश्मे के साथ काम करते हैं उसमें भी वो लाइट की वजह से होता है, ज्यादा टेंशन होने से भी हो जाता है, आई डिसऑर्डर से भी होता है, स्लीप डेप्रिवेशन से ऑब्वियसली वी हैव सीन ये डार्क सर्कल्स कमिंग अराउंड. So stress and all these contribute. I think skin specialist would be better to tell you on that. ओके. And okay, now I have a few audience questions here. So this person wants to know what happens if you don't dream while you sleep. सो देखिए, ड्रीमिंग का ना अपने को दो स्टेट में होता है. एक अपने को याद रहते हैं और एक जो अपन सुबह उठते हैं, वो अगर लेट ड्रीम्स हो और अर्ली मॉर्निंग ड्रीम्स हो एंड यू वेक अप इमीडिएटली फ्रॉम द ड्रीम स्टेट, then you remember them. Otherwise, dreaming continues in the night, and we have a particular 25% of our sleep. We do go into that phase where dreaming occurs, and whether we remember them or not, they do happen in the subconscious mind. And some of these dreams, if they are immediately awakened and you don't have that weaning off from the sleep, you remember them suddenly that this had happened to me in the sleep. So dreaming does happen. If you sleep say 8 hours, so 25% of that 8 hours would go into that REM sleep where you will have dreams. So I think to answer her question or his question, अगर आपको ड्रीम्स नहीं आ रहे हैं मतलब आप बहुत अच्छा सोए हो क्योंकि ड्रीम्स तो आ रहे हैं आपको पता नहीं चल रहा है. And this one wants to know, I've heard if you have a healthy sleep cycle, you don't need an alarm clock. Is that true? Yes, you are right. Unless your boss has given you some specific task. So don't keep an alarm and get up. Your body has a system to wake you up. You tell your body, I have to catch a flight at 4 o'clock, and you will see that you are waking up at 2 o'clock and then 3 o'clock to get ready. So Yeah. your body listens and has a clock, internal clock is there. They say it is not only with brain, each organ has its own clock. So, you know, the liver has a clock, the renal system has a clock, and each clock works in harmony. So, if you study each organ, they have a day and night kind of variability. So, it is not necessary to have a clock, and your body will remember and wake you up in case there are something which are urgent and you are
afraid that you will miss that, then obviously. Okay. So this is a question which I think you've already answered this, that I constantly wake up during my sleep. Should I consult a doctor? And how does Yes. oversleeping affect us? So I think both of them are answered. Yeah, Chavi already yeah. asked that, हाँ and जी, waking आप up in प्लीज night डॉक्टर को again. कंसल्ट सॉरी मैं तो करूंगी डेफिनेटली. So Chavi, there are some things, the studies have shown if you exercise, that is good. If you have a evening warm bath, that also helps you, So है when ना? you say And exercise, do you mean exercise before sleeping or any time of no, the no, day? no, no, no. It should be Not somewhere before around say 4 to 5. Immediately there is a lot of adrenaline release. It won't allow you. So evening exercises or day exercises, whenever you fit, will help you in good quality of the sleep. So they say that duration is not increasing, but quality of the sleep improves among those who regularly exercise and versus those who do not exercise. Evening bath, warm bath is usually good, they say, and it should be done. And best they say is see the sun and behave like that. that's the best. But इतना तो I can vouch for कि workout के बाद वो जो 20 मिनट की नींद आती है ना, ऐसी नींद तो पूरी रात नहीं आती. I know. And this Unwind another, yourself. yes, Unwind and yourself. another person wants to know, are midday naps healthy? This also I think we spoke about. Yes. So we have seen that as you grow old, these are very essential. I remember my professor of medicine, after taking a lunch, he used to just ask us to leave. And we realized that he goes to sleep, and half hour later he used to get up with all the energy till 7 p.m. We used to be tired what he is doing, and then we realized, because of these 20 minutes he gets charged for next 8 hours, and he just goes about, banging us like anything. So that nap, as you grow old, 20 minutes, so you should not have a long nap, because then it Right. will affect your the total sleep duration in the night. So 20 minutes, yes, get up and then starts doing your work. So 20 minutes मतलब डॉक्टर अलार्म लगा के सोना चाहिए 20 minutes का. It becomes a habit. Somebody, you tell someone that just wake me up after say 20 Okay, minutes, and after some time now it becomes a habit. So right. you won't go to sleep like 8 hours in the day. Okay. Now this person wants to know, it's a very genuine concern, that I'm working in a night shift, but I am not able to get sleep during the day. Please suggest something. So night shift and day. So that is a problem. So what we say is that once he comes from the night duty, so he should have his bath, and then he should prepare like what I told you. There should be no noise, draw the curtains. So you shut the sun off and say that it is night, so you deny sun that it exists, and you close your curtain, play some music, and then make the room temperature comfortable, your bed pillow, and you should stop all your electronic gadgets. Don't go to WhatsApp looking for what all people are doing in the morning, who is wishing me or not. Shut down your TVs and laptops, and just lie down, start reading something of a textbook or something in your field which is boring and which you wanted to know, and that will make you sleep. But if this does not happen, and as I told you, unwind yourself. You tell that this is done for the night. Now I cannot do anything. My thought and your emotions should be dead at that time. So just like pranayam in the yoga, they say that you leave your body and be at a different plane with your body. So leave your body and be a different person. Try to just make your body as it is paralyzed, and you are out of your body and watching yourself. So try doing that pranayam and relax yourself in such a degree that your hands does not move, and watch your body not moving. So like this, physically and mentally you should unwind yourself, and then try to get that nap back. But if it does not happen, then there are small drugs we start. These first we start with the normal body hormone which makes up sleep. So in our body there is a hormone which is secreted by pituitary, which is known as melatonin. So now it is available as tablets. So if there is a problem,
which does not go by these sleep hygiene practices, then we can think of those tablets to begin with slowly, and then you can increase their doses to a limit, because these melatonin is not addicting. It does not have a side effects. So this is the best kind of therapeutics to begin with. But every effort should be made to fall back to sleep by unwinding physically and mentally, because it is your shift is going to last for your life. So unless you change your job, you have to start practicing those things to bring yourself to a healthy sleep in the daytime. So that is what we will say. Then wake up, and as soon as you wake up, you open your curtain and tell yourself, now this is the part of the day I'm going to share, and be active and do whatever you want in your home. So it is something, you have to learn to practice and tell yourself, now it is a night for me, and begin your night sleep. Okay. And doctor, what is insomnia? Is it like the same as sleep deprivation? No, What is it? insomnia is a disease. What I you asked me, you are unable to sleep, falling to sleep, and getting up in the sleep and not falling sleep is insomnia. The rest are all sleep disorder. This gentleman has a sleep disorder. है ना? So this is the disorder which he is suffering from, and it is not sleep deficit also, because if he falls asleep in the day, he would get a 7 hours sleep if everything happens fine. So insomnia is a slightly medical and a psychiatric disorder, where the person, after 3 months we diagnose it and say that now this is something which will require either a psychiatric help or a medical management. So that is different. So you have to wait for 3 months and qualify to be called as insomniac. So you're saying waking up in the night and not sleeping is insomnia? So it is also an insomnia if you are not able to fall back to sleep within 30 minutes. Oh, then I'm an हाँ, insomniac. 3 months हो गया No, आपको छवि? 6 महीना हो गया डॉक्टर. हाँ, तो ठीक है, फिर आपको है. तो you My begin. child, my son wakes me up. He's less than 3, and then he sleeps and I don't. Oh. So Very I think problematic. with his growth, maybe you will get back to your rhythm when he grows a Probably. bit. Okay, this person wants to know that even after a good night's sleep, I find it difficult to wake up in the morning. Also, I'm not fresh. What could be the reason for that? So as I said, it is worth investigating. Now this is a clue that you are not going to deep sleep, and whether you suffer from sleep apnea or not. So if you are able to sleep physically, and in the daytime you feel that you're not fresh and you're not active in the morning, then you need to get a review whether you suffer from sleep apnea. So you visit to sleep doctors, and they will do a night study on you and see what is your pattern of sleep, whether you go into the deep phase of the sleep, or you don't, your brain does not reach and you get aroused frequently because of apneic episode. So your doctors will be able to tell you that whether you have sleep apnea or not, and that is making your life miserable. So, doctor, technically, how many REM cycles should you have for a good night's sleep? So they say REM sleep, if you have a sleep of 8 hours, so that is split into 90 to 120-minute cycles. So in each cycle, you have a, say, 25 minutes you sleep in deep sleep. Okay. So if there is, say, 100 minutes of one cycle, so if Hmm. first 100 minutes you will sleep 25 minutes into deep cycle, and this will Right. happen 3 to 5 times in your night. Okay. Okay. And now there's another question. This person wants to know, how does alcohol affect sleep? So alcohol is a great thing, because all of us used to have in our younger days, even as an MBBS student, and we used to sleep like hell. So I was thinking why it should cause sleep disorder. So subsequently, when I read about it, it says that it makes you sleep, but you don't have a quality sleep. So you don't go into the REM and the N3 phase or N2 phase of sleep. So the quality of sleep is very bad. You sleep superficially. So if you have alcohol, you will have sleep deprivation of a good quality sleep.
though everyone will see he's dead drunk and asleep till say next day noon, but that quality of sleep would not come. है But ना? I have So also realized that if it's the night that I've been drinking, I wake up much more during the night. थोड़ी सी नींद right, पूरी हाँ होकर फिर कच्ची कच्ची नींद रहती है पूरी रात. हाँ, so it is a restlessness rather than a good sleep, quality sleep. So no alcohol, at least in the evening session. But ऐसा भी तो बोलते हैं doctor that 2 drinks you should have and it will give you good sleep. Is that So true? so that is in moderation in those who are in habit of taking. So like if Okay. I take a beer, I had it, that day I will be knocked out. So it depends upon who gets what kind of kick, and whether you want to go to down to kind of totally down with that and take 6 7 pegs, or a small peg which makes you calm and happy. So that is it. What we are talking of is excessive alcoholism. So that Hmm. is what is going to affect. Okay. And mobiles are a major source of sleep disorders. Please advise. Yes, I think they are, and I see people sleeping with their mobile, WhatsApp on or Instagram on, and they continue to watch those short videos. They come over and then they say, "Tell me, sir, that there is no way I can sleep except watching these small clips." They will keep on rolling, and then I'll fall at time in sleep. So this is not good, and if there is your brain gets addicted, then the time progressively becomes awake and will increase. So I think it is mandatory, and our sleep guidelines says that mobile phones should be removed from your bed, head end of the bed, for say 30 minutes before you are about to go for sleep. So that is a must. You should see and that all your chats are completed, and 30 minutes before you prepare for a good night's sleep, as you prepare for your day's work in the morning by shaving, bathing, and polishing your face and rushing to your work. Similarly, for half an hour you should be spending your time with your body, unwinding and shutting every devices. Okay. And this person wants to know, she has a complaint that my mother can hear her own snoring while sleeping. How does that happen? So sometimes so snoring causes a lot of vibrations. So I think the brain, when it gets aroused, it can sense the vibrations which are happening. So if you are awakened soon from that choking sensation, Mm. so as your pipe of breathing gets narrowed and you start snoring, initially your brain would not get up. So as the pipe becomes too narrowed, that is the time the everything starts vibrating like a some musical instrument. And it is a kind of shaking, for physical shaking, for everything to get aroused. And your brain might be perceiving those movements and getting aroused, and part of the snoring and part of those vibrations, it perceives that yes, it something was happening. I just was not able to hold my breath and I choked and I just waked up. So that feeling of choking and that feeling of vibrations and that sound, sometimes if you are awakened suddenly, then you can remember that there were some abnormal sounds, but most of the sound happens in subconscious space. Okay, so that was the end of the audience questions, Doctor. So before we sign out from this session, I just want to give a quick review to our viewers कि हमने बहुत सारी चीजें आज सीखी. सबसे important takeaway मेरे लिए ये है कि जैसे हमारी डे टाइम रूटीन होती है वैसे एक नाइट टाइम रूटीन भी होना जरूरी है फॉर अ गुड नाइट स्लीप. और अगर आप मेरी तरह आधी रात को उठ के ऐसे उल्लू के जैसे बैठते हैं और सोचते हैं क्या करूं और टाइम देखते हैं, दैट मीन्स इट्स टाइम फॉर यू टू विजिट अ स्लीप an expert. You need expert advice, so please don't neglect it, don't ignore it, क्योंकि अच्छी नींद नहीं आने के बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, physically, mentally, and a lot of other things you can notice. So having a good night's sleep is much more important than we all give it credit. And thank you so much, doctor, for Thank you, Chavi. coming on this session and sharing all this knowledge with us. थैंक यू सो मच. मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा ये जानकर कि मुझे इंसोम्निया हो सकता है, बिकॉज इट जस्ट साउंड्स सो स्कैरी दैट यू हैव इंसोम्निया, बट आई होप Chavi, दैट देयर इज. I think you should not be worried.
As a mother, we have, and as a parent, you have to learn to live with these things, and they will improve, I tell you, because it is your kid, and it is your perception that in the night he has to be cared for, which will wake you up. Don't worry, you will come back to wo. It is not a very serious disease state. It is motherhood. And in India, where you make your children sleep with you, if you would have been an American, you would not have suffered this. But an Indian mother, I'm proud to say, you are taking care, and you will definitely come back. It is not a disease state. You should not be that worried. It will come back. Thank you. Thank you, doctor. I hope the audience also enjoyed this session. And just want to say that please, oh, there is a last question. My mother is 75 years old. Whole night is not able to sleep. She gets sleep only for 1 to 2 hours at night, and only when she takes medicine, Syncopone 100. That means 1 to 2 hours, 2 or 3 times. Please advise. So it's okay. I think a whole night sleep is again an issue. Does she compensate in the day? That is what is we want to know. Does she is able to compensate, say, 2-3 hours in the afternoon, and then in the evening, and she completes her, say, 6 hours or something like that, because she is so old. 5 to 6 hours sleep in 24 hours would be enough for her. But this day night thing, we should try to improve, as I told you, by physical and psychological method. And of course, drugs are there to help us. But each day, I think they should try to reduce that 1 hour period, from the morning. So if she is awake for, say, 10 p.m. to, say, morning 6 a.m., so you draw the lines and start reducing that period from 10 p.m. to, say, 9 p.m. से start करें आप, और उसको 10 बजे तक सोने के लिए कोशिश करें. सो एक एक घंटा करके रात की तरफ स्लीप आवर्स बढ़ाने की कोशिश करें. एंड मेडिकेशंस और ऑलवेज देयर, बट इनको फिजिकली एक्सरसाइज और ये सब जो हम लोगों ने आज डिस्कस किया है, ये भी सिखाना चाहिए. अगर इफ इट इज पैथोलॉजिकल, ऑब्वियसली शी नीड सम ड्रग्स. सो आई थिंक स्लीप डॉक्टर के पास एक बार आपको बैठना चाहिए, और इसमें से क्या चीज हम लोग रिट्रीव कर सकते हैं, और कैसे उनको फिजिकली और साइकोलॉजिकली हैंडल करें, और क्या पार्ट ड्रग से होगा, या ये दोनों 50-50 से ये सुधरेगा, तो वो अपने को देखना पड़ेगा इस केस में. I hope that answered your question, the viewer. And also, abhi I just realized that with my child, with both my children, I have always followed a timetable with them, and that's why both of them sleep through the night, and both of them started sleeping through the night when they were like 2 months or 3 months old. और तब से उनकी नींद sorted है. तो I think वो छोटा सा एक effort है जो हम बच्चों के लिए करते हैं, अगर हम अपने लिए भी करें, it's gonna make a lot of difference, because I started sleep training them with the sleep routine. That bath in the night, that massage, that music, all those things make a lot of difference. And even today, अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है डिनर टाइम पे जिसकी वजह से वो रोते हैं, या उनका मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, या कुछ शाउटिंग होती है या स्कोल्डिंग होती है, that is the night they will wake up the maximum. So again, coming back to the point that you have to calm your senses, you have to calm your mind before you go to bed, and whatever works for you, whether it's a boring math textbook, or whether it's just meditation, or whether it's just gathering your thoughts and putting them in a box just to be opened in the morning, that is completely up to you. But definitely find your way and do that. I know I'm going to do it for sure. Thank you so much, doctor, for spending this time with us, and wish you a good Sunday. And for all the viewers, please don't forget to join us the next time also. This is both of us signing out. Love and peace from us to you. Thank you, Chavi. Nice meeting you, Chavi. Same here, doctor.